Good afternoon. Good afternoon, student. I virtually welcome you all in Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. I belongs to Department of Chemistry. Myself, Kanchan Vishramji Kumbhalkar. We know the syllabus of BSc First Year Chemistry. I introduced in previous lecture. It include 6 unit. So let's start with that of the thermodynamics. In a previous lecture, I complete adiabatic and isothermal processes. In this lecture, we are dealing with work done in isothermal process. So let's start lecture 2nd of thermodynamics. So there are two types of processes has been studied. पहला स्टडी करना है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा स्टडी करना है एडियाबेटिक प्रोसेस. So there are two types of expansion has been studied. पहला isothermal reversible expansion process और दूसरा it is related with work done in adiabatic reversible expansion of an ideal gas. So let's start with first point, that is work done in reversible isothermal expansion. In this title, in this heading, 3 important points हैं. एक है रिवर्सिबल, सेकेंड आइसोथर्मल और थर्ड एक्सपांशन. आइसोथर्मल मीन्स व्हाट? जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मीन्स इनिशियल स्टेट एंड अप टू द फाइनल स्टेट. जो भी रिएक्शन चलेगा, इनिशियली जितना भी टेम्परेचर रहेगा, फाइनल स्टेप में वही टेम्परेचर मेंटेन होगा, मीन्स द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. दिस इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस. Second, reversible. There are two types of reaction, reversible and irreversible. जहाँ पे reaction reverse हो सकती है at any point, at any step of reaction, that type of reaction is known as the reversible reaction. And the expansion means when there is a work done by the system on the surrounding, means जो initial volume रहेगा वो volume बढ़ जाएगा. After change it get increases, then that can be counted as the expansion. So let consider a weightless frictionless piston with a cylinder. एक सिलेंडर कंसिडर करो जिसमें n मोल्स ऑफ गैस एनक्लोज्ड है. एक सिलेंडर कंसिडर किया जिसमें n मोल्स ऑफ गैस भर दिया और उसका जो पिस्टन है वो वेटलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, ऐसे कंसिडर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट ऑफ द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन. सो सपोज कंसिडर दिस इज द सिलेंडर और ये सिलेंडर में एक n मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फिल कर दिए. अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम आता है V1 इनिशियली. मीन्स व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? इनिशियल वॉल्यूम इज V1. एंड आफ्टर एक्सपांशन, एक्सपांशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, सडन नहीं होगा. आफ्टर अ वेरियस इनफाइनाइटसिमली वेरी different steps, after so many steps the final volume has been reaches. एक final volume पे जाएगा वो. So that final volume is counted as the V2. So what is the V1? V1 is the initial volume before expansion और expansion होने के बाद में the V2 is considered as the final expansion. अब दो चीज़ें हैं और, that is isothermal, hence the temperature remain constant. और सेकेंड चीज़, देर आर टू प्रेशर. पहला जो गैस का प्रेशर रहेगा दैट इज काउंटेड एज द P, मीन्स P इज कंसिडर्ड एज द pressure of a gas, and PEXT is nothing but a pressure of a atmosphere, जो external pressure है वो. अब
हालांकि हम एक्सपांशन कंसिडर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपांशन, वी आर स्टडिंग अबाउट द एक्सपांशन, हेंस जो भी प्रेशर ऑफ गैस रहेगा वो इनफाइनाइटसीमली ग्रेटर दैन पी एक्सटर्नल रहेगा। जो इंटरनल प्रेशर रहेगा, गैस का प्रेशर रहेगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तभी तो वो पिस्टन थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, मीन्स एक्सपांशन अलाउड होगा। सो इन दिस केस with a initial volume V1 up to the final volume V2, the expansion takes place with a pressure, internal pressure P and the external pressure PEXT at a constant temperature T. Now this is all about that. Now we are considering a equation. We know that for that of the work done, small quantity of work done, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन के लिए इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो दैट हैज़ बिन रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डी वी. नाउ व्हाट इज डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू इज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. What is P external? P external, it is nothing but the external pressure. And dV means what? As earlier stated, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक्सपांशन सडनली नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बहुत सारे स्टेप्स में होगा. सो जब एक स्टेप होगा तब जितना छोटा सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज काउंटेड एज द dV. So hence dW is a small quantity of work done when the small quantity of volume, that is dV, get increases or get expand, and P external is nothing but a pressure of external surrounding. And what about the minus sign? Minus sign indicate that work done by the system on the surrounding. Now but the expansion is reversible. As we earlier stated, the reversible expansion has been considered. So hence the pressure of gas is greater by smaller quantity dP than P external. So the equation can be written as P minus P external is equal to dP. As earlier stated, पहले ही बताया कि एक्सपांशन है तो इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर. So hence P minus P external is nothing but a dP. So P external can be written in the form of P minus dP. So putting this P external value in first equation, so we get dW is equal to minus in bracket P minus dP into dV. So the equation can be simplifying the equation, we get dV से multiply करो both को. So we get dW is equal to minus pdV plus dP into dV. dP और dV जो है वो बहुत छोटे अमाउंट है, therefore dP and dV get neglected in a next equation. So let's see it. Now dP and dV, because both are very small, बहुत कम वैल्यू है उनकी, hence the product of dP and dV get ignored. So the equation remain dW is equal to minus pdV, where P is the pressure of gas and dEV is small change, small increase in volume in a one step. Now पूरा वॉल्यूम dV चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 to V2. हेंस जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हमें अबो इक्वेशन मस्ट बी गेट इंटीग्रेटेड. सो इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ pdV. वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है? इनिशियल स्टेप है उसकी V1 एंड फाइनल स्टेप है उसकी V2. देयरफॉर V1 टू V2 जा रहा है, हेंस वी राइट इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम V1 टू V2. लोअर V1 means लेस वाला क्वांटिटी कौन है? V1 and higher quantity is V2. Therefore the integration of dW is equal to minus V1 integration of V1 to V2 pdV. Now for ideal gas we know that PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. So on this we can calculate the value of P. So
from this equation we can write P is equal to nRT upon V. V वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो nRT के वहाँ डिवीजन पे चला जाएगा. So this is the value of P. So put the value of P in equation number 3. So we get equation modified as W is equal to minus integration in a limit of V1 to V2 nRT upon V into dV. अब ये इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करना है. Now in this equation we get W is equal to minus integration in limit of V1 to V2 nRT upon V into dV. Now nRT are the constant which does not affected with the limit of V1 to V2. So take it outside of the integration. So we get W is equal to minus nRT integration in a limit of V1 to V2 dV upon V. So finally integrating we get the equation W is equal to minus nRT ln of V2 upon V1. After integration, solving integration, we get this equation. But we cannot calculate the log to the base e or ln. हम log बुक में ln या फिर log to the base e नहीं निकालते हैं, log to the base 10 निकालते हैं. So यहाँ पे log to the base e का कन्वर्शन, ln का कन्वर्शन log to the base 10 में करने के लिए we have to multiply this equation with a 2.303. So after multiplying with a 2.303 we get W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. This is our fifth equation. This is our final equation in the sense of volume. So what is the work done in a reversible isothermal expansion process? It is equal to W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. But this equation can we write in a pressure? Yes, we can write this equation in pressure format also. For that purpose, we know that the Boyle's law. What the Boyle's law state? The P1 V1 is equal to P2 V2. The pressure of a system is inversely proportional to the volume. This is the Boyle's law. So P1 V1 is equal to P2 V2. So take a pressure, all pressure points to the one side and volume to the another side. So we get equation P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. In fifth equation, there is a V2 upon V1. So put the value of V2 upon V1 that equation. So we get another W value, another work done equation. So it's a W is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. This is the same equation for the reversible isothermally expansion process in the format of pressure. So this is all about the work done in isothermal reversible expansion process. Now finally, what is meant by minus sign? Minus sign indicate that the work done by the system on the surrounding. By the system means what? The piston is moving upward. वो पिस्टन कौन चेंज कर रहा है पोजीशन? द गैस. सो वर्क कौन कर रहा है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम on the surrounding. Hence the sign indicate the minus sign. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will start with work done in adiabatic reversible expansion of ideal gas. So up till then, take care, be safe. Thank you.